Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss some important questions of the chapter Our Environment. So let's start. Now the first question is, why is ozone layer getting depleted at the higher level of the atmosphere? So ozone layer questions are always asked in the board exam. So this topic is very important. Okay. So the ozone layer is getting depleted at the higher level of the atmosphere due to effect of chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants and in fire extinguisher. So chlorofluorocarbon is the main source which affect the ozone layer, which is responsible for the depletion of the ozone. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर हाई लेवल, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं ओके, तो वो लेवल जो है वहाँ पे ज़्यादा है. एंड दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. Now next question is, name any two abiotic components of an environment. So now this question here you can write, it's not that whatever you can see on the screen only this is the answer, you can write any abiotic components. Okay. नाउ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से आप लोग फेमिलियर है. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दे कम अंडर बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टेम्परेचर एंड रेनफॉल. इट कुड बी योर लैंड, ओके, इट कुड बी सनलाइट. ये सब भी जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. नाउ ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. वाई? बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉप्स. दे कैन प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. अगर हम लैंड की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. अगर आप वाटर बॉडीज़ की बात करोगे तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. Which disease is caused in human beings due to depletion of ozone layer in the atmosphere? Now, this ozone layer depletion, it is important for, because it affects our environment and it affects human beings also. So the main effects of this ozone layer depletion is because this ozone layer, it protects the harmful UV rays from coming to our earth. तो जब ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो क्या होगा कि जो यूवी रेज होंगी, हार्मफुल रेज होंगी, वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाएंगी अर्थ पे एंड इट विल कॉज स्किन कैंसर. ओके, स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं दे विल बी मोर प्रोमिनेंट. ओके, सो स्किन कैंसर इज कॉज्ड इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वाई इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर. Why is the damage of ozone layer a cause of concern to us? State a cause of this damage. Now this you can see, इसमें 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज, why is ozone formed in the upper atmosphere? Ozone is formed in the upper atmosphere by the reaction of UV radiations on oxygen molecule. ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ओजोन बनता है O3, दैट इज. नाउ नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न. सो एज वी ऑल नो, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को. सो द डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न टू अस, as due to its damage more UV rays reach the earth surface causing various health hazards. So that's why it is the main reason or it is the main cause of concern. Now इसी का last part है, state the cause of this damage, why this damage occur. So the cause of this damage is the presence of large amount of chlorofluorocarbons in the atmosphere. Due to this damage occurs.
So these are the few questions of this chapter. There are many more that we'll be discussing in the next lectures. So thank you everyone.